Hello friends, welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today we are going to see your chapter number 20, Disaster Management from Social Science textbook. And this will be having, let's say, we are dividing this into 3 parts. Okay, so in first part we will be going through introduction, types of disasters and natural disasters, and in another part man-made disasters, and in another part impact of disasters on human life, and lastly rehabilitation of disaster. Now what do you mean by disaster? So disaster is any natural or human hazards which disturb humans as well as living beings life. Okay, so that thing is known as disasters. जैसे कि earthquake आ गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, ठीक है। तो ये सब को, या मैन मेड डिजास्टर्स की बात करें तो हम लोग राइट्स करते हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स होती है, टेररिस्ट अटैक होता है, ये सब जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मैन मेड डिजास्टर्स। सो डिजास्टर्स मे बी कैटास्ट्रोफिक और डायट्रोफिक। नाउ कैटास्ट्रोफिक मीन्स जो नेचुरली अकर होने वाले होते हैं वो, और डायट्रोफिक उसका मतलब क्या होता है? जो मैन इंड्यूस्ड होते हैं, जिसमें इंसान का हाथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। ओके, सो लेट अस बिगिन विथ अवर चैप्टर। इंट्रोडक्शन, लिसन टू द इंट्रोडक्शन केयरफुली। Chapter 20, Disaster Management. Introduction. A disaster may be natural or man-induced, may be catastrophic or diastrophic, may have originated in the interior of the earth or in atmosphere. It is felt over extensive area on the earth and also results in devastation. If we examine a few phenomena, it will be clear that a disaster damages lives and property to a great extent. Some events like volcanic eruption, earthquake, tsunami, etc. are the collective result of both natural as well as man-induced acts. So, what do you mean by disaster? Disaster is nothing but any phenomenon, natural phenomenon which disturbs all the living beings' life is known as disasters. So disasters may be man-induced or it may be natural. So what are the natural occurring disasters? Flood, cyclone, earthquakes, etc. We can include them in natural disasters. And what are man-induced disasters? So then riots, okay, terrorist attacks, ये सब जो है ये अपने कैसे होते हैं? मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। सो डिजास्टर्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? डिजास्टर्स अगर होते हैं तो हम लोगों को क्या क्या चीज की तकेदारी रखनी चाहिए और क्या क्या चीज हम लोगों को नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग दैट डिजास्टर? फॉलोइंग डिजास्टर्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, and destruction. Example, atomic attack by US bombers over Hiroshima and Nagasaki cities of Japan in the Second World War. Whereas some events are results of human negligence or mistakes. Example, Bhopal gas tragedy, Chernobyl atomic disaster of Russia. So, कुछ में मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर में भी 2 हिसाब के होते हैं, एक जानबूझ के करने वाले और दूसरे जिसमें इंसान की बाय मिस्टेक गलती हो जाती है। अब मैन जो प्री प्लान होते हैं, जैसे कि टेररिस्ट अटैक्स जो होते हैं, या अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराए थे, वो सब जो होते हैं वो प्री प्लान है, ठीक है। और बाय मिस्टेक जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था जिसमें MIC गैस लीक हो गया था, वो सब जो रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन मेड, लेकिन मैन की मिस्टेक की वजह से होता है, ठीक है। सेकंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। नाउ बच्चों, सेकंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स।
we are aware of the risks of disasters. To decide the strategy for relief work, it is necessary to know the reasons and responsible situations. Now, it is important to know these. First of all, I will tell you what are natural disasters and what are man-induced disasters. तो natural disasters जो naturally occur होते हैं, जिसमें human का हाथ नहीं होता है, ठीक है, उसको natural disasters बोलते हैं. And man-induced मतलब दो type के disasters है, natural and man-induced. Man-induced जिसमें pre-planned activities done by man, or you can say man-made mistake will create a hazardous effect, and that is included in man-induced disasters. In today's topic, we will be seeing total natural disasters. So natural disasters have flood, cyclone, earthquake, volcano, then what we say forest fire, tsunami, etc. etc. और उसमें से भी फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट वगैरह जो है हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, फॉरेस्ट फायर है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट देम. और प्रेडिक्शन नहीं तो बहुत ज्यादा डिवास्टेशन या हैजार्डस इफेक्ट हो सकती है. वेयर एज इन मैन इंड्यूस्ड तो आप लोग देख सकते हो टेररिस्ट अटैक है, ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम्स है, राइट्स है, बॉम्ब एक्सप्लोजन है, ठीक है, भोपाल मतलब गैस लीकेज है, मतलब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स है, वो सबको हम लोग क्या बोलेंगे? वो सबको हम लोग बोलेंगे मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स. सी दिस. Preparation for relief work. Experts on disaster management have divided the disasters into two categories. One, natural disasters. These include flood, cyclone. See, flood, cyclone, tsunami, drought. These are natural disasters, but we can predict them. Forecast हो सकता है. लेकिन earthquake, volcano और forest fire ऐसे हैं जिनको हम लोग what we say कि प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं. ये कभी भी आ सकते हैं और कितना डैमेज कर सकते हैं वी कैन नॉट इवन इमेजिन. और ये सारे जो है ये मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स है. फायर हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो गया, बॉम्ब एक्सप्लोजन, राइट्स एक्सेट्रा. Tsunami, drought, earthquake, volcano, forest fire, etc. Of these, a forecast is possible for floods, cyclone, tsunami and drought, while it is not possible to forecast earthquake, volcanic eruption, forest fire. 2. Man-induced disasters. Here, fire, industrial accidents, bomb explosions, riots, etc. are included. Natural disasters. So we will be studying today all the natural disasters, what should be done and what should not be done when any natural disasters occurs. So starting with सबसे पहले flood. What do you mean by flood? ठीक है, due to excessive or heavy rainfall, ठीक है, पानी जो है वो नियर बाई सेटलमेंट्स में 3-4 दिन तक रहता है, ठीक है, submerged the land, ठीक है, या सबमर्ज्ड हाउसेस, तो वो सब उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये पानी जमा होता है नियर बाय अवर सेटलमेंट्स एंड दैट इज नोन एज फ्लड. फ्लड की दो रीजंस है, डैम ब्रेक हो जाना, लैंड स्लोपी होना, या फिर वी कैन से कि एक्सेसिव रेनफॉल होना, उसकी वजह से फ्लड आने के चांसेस है. Flood. By flood, we generally mean an extensive land area remaining submerged underwater continuously for several days. People associate flood with river when river water overflows its banks and the nearby land area comes underwater. Flood is a natural event and is the result of continuous heavy rainfall. Floods become dangerous when some construction is carried out ignoring human activities, drainage pattern, slope of the land, etc., and damage lives and property on a large scale. What to do? Collect your precious and personal requirements. So whenever there is flood, we should do one most important thing. अपने सारे important documents को collect करो और वो collection के बाद ठीक है एक safer जगह पे जाके पहुंच जाओ. And take refuge at a safer place. Put water, dry breakfast, candles, lanterns, matchbox in a plastic box
ठीक है। ये क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि जनरली देखना, जब भी फ्लड आती है तो इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, पानी की वजह से हम लोग कहीं पे बाहर घूमने नहीं जा सकते, ना ही कहीं पे कुछ लेने जा सकते हैं। तो ऐसी चीज जो डेली नेसेसिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोगों को साथ में रखनी चाहिए, जैसे कि वाटर, ड्राई ब्रेकफास्ट, कैंडल्स, क्योंकि व्हाट वी से लाइट्स नहीं होगी, लैंटर्न्स, मैच बॉक्स, ये सब हम लोगों को अपने साथ रखना चाहिए। बच्चों को कभी भी हंग्री नहीं रखना चाहिए, पानी बॉयल ही पीना चाहिए, ठीक है। देन मेडिसिन वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए अपने पास, so that they do not get wet and they should be kept with you. Do not keep the children hungry. After the flood recedes, drink only boiled water. Radio, mobile phone should be kept with you invariably. और ये सब फुल्ली चार्ज रख के रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज, कीप अ बाम्बू स्टिक विथ यू, क्योंकि स्नेक्स जो होते हैं वो ड्राई प्लेसेस पे आने की कोशिश करेंगे, और ड्राई प्लेसेस पे जैसे ही आएंगे इट मे ट्राई टू कम टू योर प्लेस। तो व्हाट यू विल डू इज कीप अ बाम्बू स्टिक सो दैट यू कैन मेक देम अवे, ओके। Be aware of snakes. They may come to dry places. Keep a bamboo stick to drive them away. What not to do? What not to do? फ्लड आने पे क्या नहीं करना? Do not eat food prepared in flood water. ठीक है, फ्लड के पानी से खाना नहीं बनाना चाहिए। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, ये होने के चांसेस होते हैं फ्लड वाटर में, जिसकी वजह से कंटामिनेशन बढ़ता है, कंटामिनेशन की वजह से बीमारियां बढ़ती है। तो डू नॉट प्रिपेयर योर फूड instead of that, prepare it in boiled water only. Then do not move out without collecting authentic information about route and situation before going to a safer place. क्यों ऐसा होता है कि अगर आप रांदेर से निकलते हो और अडाजन में पानी है तो आप लोग रांदेर में स्टक हो जाते हो। इंस्टेड कलेक्ट, अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो कि हाँ कहाँ पे पानी है, कहाँ पे नहीं है, कौन सा रूट खाली है, देन गो टू सेफर प्लेस इंस्टेड। अदरवाइज आप लोग अपने ही घर पे सेफली रह सकते हो। Authentic information about the routes and situations before moving to a safer place. Cyclone. Now, what do we mean by cyclone? Cyclone is nothing but air pressure या low atmospheric pressure, high atmospheric pressure जब develop होता है during sea coast, maximum amount of wind will pass, और ये maximum amount of wind जब circular pattern में बाहर निकलती है तो उसको हम लोग इंडियन या सब कॉन्टिनेंट लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं। Whereas in USA it is said to be known as hurricane, or you can also say it as tornado. Whereas in Japan and China it is known by another name which is known as typhoon. ठीक है, तो साइक्लोन के अलग अलग नाम है। इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट्स में उसको साइक्लोन बोला जाता है। Whereas in America, USA it is known as hurricane or tornado. While in China and Japan it is known as typhoon. और वो किसकी वजह से जनरेट होता है? Generation of atmospheric pressure inside the sea, which will create a maximum wind speed, and that is known as what? Cyclone. Disturbances. A sudden strike is made by severe storms. These storms are known as cyclone in Indian subcontinent, hurricane and tornado in USA, as typhoon along the coasts of China and Japan. These severe atmospheric storms are created due to unequal atmospheric pressure. Such storms or cyclones create devastation over the area over which they pass. So especially ये जो एरिया है एंड इतना एरिया है, वहां पे डिवास्टेशन होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, अनइक्वल डिस्टर्बेंस, ये घूमते घूमते ये सारे सी कोस्ट को लेके जाता है। दैट्स व्हाई साइक्लोन जब भी आए तो सी कोस्ट से दूर रहने में ही भलाई है। okay? Its devastating effects are felt along the coasts of eastern India and Kutch, Saurashtra. What to do? Keep viewing. हमेशा टीवी और रेडियो सुनते ही रहे ताकि अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन गैदर हो और आपको पता चले कि कौन से टाइम पे किस जगह पे ये चीज स्ट्राइक होने वाली है।
Viewing the news bulletins on TV, radio to know the anticipated time of the oncoming storms. Those who have a radio should keep an extra battery ready. Because again, What not to do? What to do? ठीक है, बैटरीज एक्स्ट्रा चार्ज कर लेनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। मोबाइल फोन्स चार्ज कर देने चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास पावर बैंक्स है उन सबको भी फुल्ली चार्ज करना चाहिए। खाना, ड्राई नाश्ता, ठीक है, पानी, and most importantly medicines for children and old people should be kept alongside you when there is a cyclonic effect near your area. Keep viewing the news bulletins on TV, radio to know the anticipated time of the oncoming storms. Those who have a radio should keep an extra battery ready. Mobile phones should be kept fully charged in advance. If you have a power back instrument, it should also be charged fully in advance. Listen carefully to the instructions, warnings, broadcast over radio and implement them. सिर्फ सुनो नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी करो। अगर वो लोग बोलते हैं कि सेफर जगह पे आपको जाना है तो आप लोग उनका जो भी बोले उनका पालन कीजिए, उनसे आर्ग्यूमेंट ना कीजिए। ओके? Stay away from rumors. अफवाहों से दूर रहे। What not to do? Store additional food, dry breakfast and drinking water as per need. Keep provision of food and medicines necessary for children and old people. If the rescue team tells you to vacate your home, cooperate with them. Use pure and safe drinking water. If you have taken shelter in a shelter home created by the government or any NGO, then follow their instructions and do not leave the premises without their instructions. So, अगर आप कहीं पे भी रेफ्यूज करके रह रहे हो, कहीं और किसी जगह पे शेल्टर लिया है, चाहे वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको NGO बोलते हैं, तो अगर आपको बाहर जाना हो तो टेक प्रायर इंफॉर्मेशन, गिव प्रायर इंफॉर्मेशन टू देम। और वो लोग अगर ना बोलते हैं तो उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए, दादागिरी नहीं करनी चाहिए और स्टे वेयर देयर इट इज, क्योंकि वो लोग आपके बेनिफिट्स के लिए ही काम करते हैं। ओके? Do not keep your domesticated animals tied up to their posts. क्यों ऐसा होता है? सबको फ्री कर दो, क्योंकि वो लोग अपना खुद का डिफेंस खुद अच्छे से कर सकते हैं। इंस्टेड आप उनको बचाने जाए, वो अपने आप को अच्छे से बचा सकते हैं। दैट्स व्हाई डू नॉट कीप इन देम। ठीक है? If they are free, they can defend themselves in a better way. What not to do? Do not pay any attention to gossips or rumors. अफवाहों से तो दूर ही रहे। सिर्फ रेडियो और टेलीविजन पे जो अच्छी खबर देते हैं उनको फॉलो कीजिए और इम्प्लीमेंट भी कीजिए। Except for the instructions issued by the weather department on radio. If the atmosphere calms down suddenly, rain stops. ये भी अच्छा है। सडनली अगर बंद हो जाता है, बारिश भी बंद हो गई, हवा भी बंद हो गई, तो ऐसा सोच के निकल नहीं पड़ना चाहिए कि चलो अब खत्म हो गया। नहीं, वो कभी भी वापस आ सकती है, कभी भी बारिश हो सकती है। इंस्टेड उस दिन घर पे ही रहे। Wind becomes standstill. Even then, do not go in open area. Wind or rainfall may strike suddenly. Do not touch Obviously, do not touch any kind of electric poles या any traffic poles, क्योंकि साइक्लोन की वजह से, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड की वजह से अगर लूज वायर्स हुए तो करंट लगने के चांसेस है, या तो फिर वो गिर सकता है आपके ऊपर, तो उनसे दूर ही रहे। Electric poles or loose wires. Stay away from them. Do not take shelter near bigger hoardings or large, क्योंकि लार्ज ट्रीज दोनों के गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। trees. Earthquake. Now, what do you mean by earthquake? An earthquake in general means earthquake जनरली होता क्या है
जो अर्थ का शेकिंग होता है ऑन अपर सरफेस को आपको ऐसा लगता है कि ये शेक हो रही है, लेकिन ये शेकिंग होता है ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट्स मूविंग इनसाइड द अर्थ। आप लोगों को पता है कन्वर्जेंट प्लेट्स, डाइवर्जेंट प्लेट्स, तो मूवमेंट ऑफ दिस टेक्टोनिक प्लेट्स विल कॉज डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ, एंड वो डिस्टर्बेंस की वजह से सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी डिस्टर्ब, और यू कैन सी इट शेकिंग। That is nothing but it is known as earthquake, ठीक है। We cannot predict earthquake, earthquake कभी भी आ सकता है, और जिसकी वजह से we can have devastation effect। हाँ, we can see that कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इतना पता चलेगा कि अर्थक्वेक की वजह से या उसका एपिसेंटर क्या है या कौन से एरिया में उसने अफेक्ट किया है वो पता चल सकता है, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अर्थक्वेक। और अगर अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है तो उसकी वजह से डिवास्टेशन इफेक्ट इज मच मोर। ओके, Due to tectonic activities in the interior of the earth, an earthquake is felt. Its major areas are the regions with weaker relief on the surface of the earth. Probable earthquake regions can be identified, but an earthquake cannot be forecast. Thus, much damage is caused in the absence of a forecast. What to do? During an earthquake, ये खास ध्यान रखना, अर्थक्वेक के टाइम पे किसी भी बड़े टेबल या स्कूल में हो तो बेंच के नीचे रह जाओ। क्यों? अगर ऊपर से कुछ भी गिरता है, ठीक है, पूरा का पूरा स्लैब गिर जाता है, तो इट माइट हेल्प यू कि आप लोगों की हड्डियां थोड़ी बहुत भी बच सकती है, क्योंकि ऊपर से अगर कुछ गिरा तो यू कैन बी एट अ सेफर प्लेस। ओके, stay beneath a large bench or a table. If you are in a school, sit beneath a bench. If you are in an open space, stay away from the buildings, balconies, electric poles. जहाँ पे हो वहीं पे रुक जाओ। गाड़ी चला रहे हो तो जो गाड़ी में हो वहीं पे स्टॉप हो जाओ until unless tremors उसके रुक न जाए। और कोई अगर आप लोग ब्रिज पे हो या ब्रिज के नीचे हो तो वहीं पे स्टेडी हो जाओ। Do not move here and there in panic. Okay? Buildings, balcony, electric power lines and electric poles. If you are driving a vehicle, then bring your vehicle to a halt over or below a bridge. Keep away from electric poles, power lines, and traffic signals. Remain seated in your vehicle till the earthquake tremors are not over. Even after the earthquake tremors are over, few things. Do not try to open or close the fridge. Do not stand near that photo frames. Do not stand under fan या zoomer जिसको glass chandelier भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वहां पे खड़े मत रहो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ट्रेमर्स जाने के बाद कुछ टाइम बाद ये सारी चीज गिर सकती है, तो उससे अच्छा दूर ही रहो, नहीं तो अगर गिरा तो आप लोगों को इफेक्ट कर सकता है। Things like fridge, photographs on the wall, ceiling fans, etc. may fall down afterwards, so keep away from them. For instructions or guidance about the event, listen to the local radio. New buildings under construction should be made earthquake proof. अब ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बात है, इस तरह से आप लोगों को बिल्डिंग बनाना चाहिए ताकि आपका जो बिल्डिंग है वो अर्थक्वेक प्रूफ हो। दैट मींस यू कैन नॉट इवन फील द इफेक्ट ऑफ ट्रेमर्स। इस तरह से बनना चाहिए। What not to do? Do not shout or flee in panic. चिल्ला चिल्ला के चले नहीं जाने का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डू नॉट यूज लिफ्ट, मतलब एलिवेटर्स, ठीक है, आप लोग क्या करोगे, लिफ्ट्स में नहीं जाओगे। Do not attempt to prevent the things falling down after the earthquake tremors. Do not use elevators to go down. If you are in a house, do not stand near wooden cabinets or cupboards, safes, mirrors or a glass chandelier. इसकी ये गिरने के चांसेस है, इसीलिए इनसे दूर रहना चाहिए। ओके,
Do not light a matchstick or a ये light. भी चेक कर लेना कि आपके घर में जो गैस लाइन है या गैस का बॉटल है उसमें कुछ लीकेज नहीं हुआ है। अगर लीकेज है तो डू नॉट स्टार्ट योर मैच स्टिक्स या कुछ भी स्टार्ट करने मत जाना, नहीं तो क्या हो सकता है वो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो सकता है, और ब्लास्ट की वजह से आप तो जाओगे, आपकी सोसाइटी जाएगी, आपका बिल्डिंग भी पूरा बर्न हो सकता है, एक्सप्लोड होगा, एक्सप्लोजन होगा। A lighter. Do not switch on electric gadgets before confirming that the cooking gas is not leaking, because leaking gas may explode. Do not make a phone call unless for emergency medical help or fire. तो ऐसा मत सोचो कि चलो 108 को फटाफट फोन करके बुला लेते हैं। अगर इमरजेंसी नहीं हुई, अगर आप अपने आप को सेफ फील कर रहे हो तो डू नॉट कॉल एनी इमरजेंसी नंबर्स, क्योंकि वो लोग अपने काम में बिजी होते हैं। आप उनको बुलाओगे तो वहां से आपके लिए आएंगे और दैट इज नॉट इवन सीरियस। तो दूसरों की हेल्प करने के लिए वो लोग जा रहे हैं तो उनको हेल्प करने दो। ओके। A prompt phone call may interrupt telephone network, which may obstruct the relief work. Tsunami. Now, tsunami is due to, very important, ठीक है, earthquake, but inside the sea surface having more than 7 Richter scale. Now, what do you mean by Richter scale? Earthquake जिससे मेजर किया जाता है उसको रिचर स्केल बोलते हैं। तो मोर देन 7 अगर रिचर स्केल के ऊपर सी के अंदर अगर आप लोगों का अर्थक्वेक होता है तो उसको सुनामी बोलते हैं, और वो सर्कुलर पैटर्न में फिर धीरे 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 बढ़ती है, और उसके वेव्स भी जो होते हैं दैट इज वेरी 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 लार्ज। तो वो पूरी पूरी बिल्डिंग तक को उड़ा सकते हैं। आप लोग जब पैदा भी नहीं हुए थे 2004 26 दिसंबर में ये सुनामी हुआ था, ठीक है। और इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, यहाँ के 2-2.5 लाख लोग जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर चुके हैं, ठीक है। सो सुनामी इज अ डिस्ट्रक्टिव वेव इन जापानीज लैंग्वेज। यहाँ पे टी जो है वो साइलेंट है इन सुनामी। And powerful sea waves are called tsunami. These are generated at the sea bottom due to earthquake having a rating of 7 or more on Richter scale, or by a volcanic eruption within sea, or by a large-scale landslide on ocean floors. Tsunami means destructing waves in Japanese language. Tsunami occurs mostly due to earthquakes on ocean floors. So these are also known as oceanic earthquake waves. So always remember one thing, tsunami is also known as oceanic earthquake wave. So you may be asked that write a note on oceanic earthquake waves. So do not write earthquake, but write about tsunami. Okay. These waves travel very fast in circular pattern from the place of their origin. In deep sea, these waves are not seen distinctly due to their shorter wave heights, but when they approach coasts and shallow sea, they turn into devastating form. Its velocity reduces near coasts, but height increases. So धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो कोस्ट तक कम हो जाती है, लेकिन हाइट जो है वो बढ़ती है, और जिस हाइट से वो जाता है वो पूरे पूरे बिल्डिंग को भी बर्बाद कर सकता है। ओके। So these waves surge ahead in the form of a wall near seacoast and cause devastation. More than 2 lakh people from Thailand, India, Indonesia, Sri Lanka and other southeastern countries became victims of highly destructive tsunami on 26th December 2004. With modern equipments, a forecast and a nearly exact time of the striking of a tsunami can be predicted. In future, more deaths can be prevented with due precautions. अब इतना पता चल सकता है, इतने मॉडर्न इक्विपमेंट्स है कि सुनामी कब स्ट्राइक होगा, और तब जब स्ट्राइक होगा उसके पहले हम लोग प्रिकॉशंस लेके बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है बचा सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू द मॉडर्न इक्विपमेंट्स। What to do? सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके एक सेफर जगह पे चले जाओ, अवे फ्रॉम सी कोस्ट। व्हाट टू डू? Tsunami warning
Move to a safer place away from seacoast. Keep a radio handy and act according to the instructions received from the authorities. Construction of new buildings and societies should be carried out considering the tsunami. जैसे अर्थक्वेक प्रूफ बनाना चाहिए वैसे ही सुनामी प्रूफ भी होना चाहिए आपका जो भी बिल्डिंग्स है या कंस्ट्रक्शन हाउस है वगैरह, ताकि एटलीस्ट प्रॉपर्टीज जो है वो बर्बाद ना हो. Tsunami impact. Mangrove reduces the over. What not to do. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंग्रोव ट्रीज जो है वो अच्छे से डेवलप होने चाहिए ड्यूरिंग मतलब एट सी कोस्ट. उसका क्या है, वो उसकी हाइट भी होती है और उसके जो लेंथ है जिसकी वजह से क्या होगा, वो स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. जैसे स्पीड रिड्यूस हो जाएगी सुनामी इफेक्ट जो है वो कम होता जाता है. तो पूरे जितने भी सी कोस्ट है वहां पे मैंग्रोव ट्रीज जो है वो लगा देने चाहिए. What to do? With tsunami warning, move to a safer place away from seacoast. Keep a radio handy and act according to the instructions received from the authorities. Construction of new buildings and societies should be carried out considering the tsunami impact. Mangrove reduces the overall impact of tsunami, so attempts should be made to expand their span. What not to do? Do not take shelter on tall buildings. Obviously, ये तो एकदम लॉजिक है कि do not stand at near या उसके ऊपर नहीं खड़े रहना चाहिए, क्योंकि चांसेस है कि ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो सकता है. Because these buildings may collapse due to destructive waves. After the tsunami recedes, do not approach seacoast till the instructions are received from the authorities. Drought. Now, what is drought? Drought का मतलब है due to very scanty rainfall or you can say absence of rainfall, जो सूखा पड़ता है जिसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन डिस्टर्ब हो जाता है. पूरी जो ह्यूमन लाइफ साइकिल है या पूरी लिविंग बीइंग्स की लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब होती है. तो दैट इज नोन एज ड्राउट. क्योंकि पानी नहीं तो क्रॉप्स नहीं, क्रॉप्स नहीं तो फूड नहीं, एंड फूड नहीं तो इंसान नहीं. और चलो बिना भूख के तो मतलब बिना खाने के तो इंसान थोड़ा बहुत भी रह सकता है, बट व्हाट अबाउट वाटर? अगर पानी नहीं मिला तो विद इन मैक्सिमम लेट्स से 2 or 3 days उसके बाद ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव. और ड्रॉट की वजह से हंगर होता है और हंगर एंड स्टार्वेशन कॉज टू डेथ्स ऑफ many people. So drought is more hazardous than flood. Okay. Destructive hazard, leaving a long-lasting impact. It is connected with water and food, which are very much needed for the existence of living organisms. The problem of drought occurs in regions of monsoon climate, where the rainfall is irregular and is very scanty. This is so because the agricultural crops, food grains, and living organisms depend completely on water. The shortage is created due to water crisis. Under such conditions, heavy damage is done to agriculture and natural vegetation. Earlier, many people died of starvation during. Starvation means hunger, भूख मरा जिसको बोलते हैं. During a drought, but now it could be reduced due to transportation and well-planned management. What to do? Drip irrigation in very important thing. ड्रिप इरिगेशन हर एक फील्ड में होना ही चाहिए ताकि वाटर की कमी हो फिर भी वाटर जो है वो पूरे फील्ड में अच्छे से जा सके. ठीक है. Agriculture should be intensified. Food rationing and use of water should be. फूड का प्राइस, फूड की राशन उस तरह से होनी चाहिए ताकि सबको उसका बेनिफिट मिल सके. Be planned after estimating their availability. Arrangements should be made for fair price distribution of food grains and relief work. Construction activity should be stopped. अगर एकदम इम्पोर्टेंट ना हो तो सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद हो जाने चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा वाटर यूज होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में. सो वी शुड स्टॉप यूजिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. अगर इनएविटेबल नहीं है तो बंद ही कर दो. ठीक है.
except for the inevitable work. What not to do? सबसे पहले बड़ी बड़ी पार्टीज नहीं होनी चाहिए। बड़ी बड़ी पार्टीज होनी चाहिए, एक्चुअली हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि बड़ी पार्टीज में होता क्या है, यू विल गेट वेराइटीज ऑफ फूड, और फिर हर एक फूड को तो आप लोग ट्राई नहीं कर सकते हो, तो वो फूड फिर बचता है और फिर वो बचा हुआ फूड हम लोगों को डाल देना पड़ता है। इंस्टेड पार्टीज होल्ड करो तो कम लिमिटेड इंसान को बुलाओ और खाना भी लिमिटेड ही बनाओ, ताकि कुछ भी फूड जो है वो बर्बाद ना। To prevent the food wastage, do not hold large-scale dinner parties. Citizens should not hoard food grains or fodder. फूड को हम लोगों को जमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अपनी जरूरियत के हिसाब से अगर जमा करते हैं तो दैट इज फाइन इनफ। जरूरत से ज्यादा होगा तो कुछ लोग जिनकी जरूरत होती है वो हम लोगों की वजह से उनको नहीं मिलता है, तो कीप द फूड विच इज रिक्वायर्ड टू यू ओनली, उससे ज्यादा स्टोरेज नहीं होना चाहिए। Fodder. Forest fire. सबसे पहले फॉरेस्ट फायर, ठीक है। फॉरेस्ट फायर ऐसी चीज है जिसमें एक इंसिडेंट के अलावा बाकी सारे इंसिडेंट उसको हम लोग मैन इंड्यूस्ड बोलेंगे। फॉरेस्ट फायर एक लौता ऐसा है, एक ही ऐसी टॉपिक है जिसकी वजह से उसको हम लोग नेचुरल डिजास्टर में डाल सकते हैं, एंड दैट इज एक्सेसिव लाइटनिंग, ठीक है। थंडर और लाइटनिंग जो होती है, ठीक है, बिजली गिरती है, उसकी वजह से देयर माइट बी चांस कि फॉरेस्ट फायर हो सकता है। बाकी के सारे जो भी रीजंस है ड्यू टू मैन इंड्यूस, क्योंकि मैन अगर मैन मीन्स ट्रैवलर, टूरिस्ट या सेफर्ड्स वहाँ के हैं, अगर उनको सिगरेट्स बीडीज जलाने की आदत है और वो खुला हुआ या बर्न्ड चीज अगर ऐसे रख देते हैं तो क्या होता है, फॉरेस्ट फायर हो सकती है। दूसरी चीज ऑटम सीजन में, मतलब व्हेन द प्लांट्स लीव्स शेड देयर फ्रॉम द ट्रीज, ठीक है, वो फ्यूल की तरह बर्न कर सकता है लीव्स या सूखी हुई घास, तो वो फिर फायर को बढ़ावा दे सकता है। दैट इज व्हाई फॉरेस्ट फायर के लिए वी द ह्यूमन बीइंग्स आर मच मोर रिस्पॉन्सिबल देन द नेचुरल डिजास्टर्स। Occurs in forests and creates devastation. Except for lightning, all other reasons for a forest fire are man-induced. Among them, throwing of burnt butts of cigarettes, BDs, or matchsticks, burning things left by tourists, pilgrims, or shepherds, etc., are the major reasons. There are more probabilities of a forest fire occurring during a dry season after autumn. At that time, the dry grass and fallen tree leaves act as fuel. This situation is responsible for the spread of forest fire. When both wind and inflammable fuel are dry, they form the basis of forest fire, which spreads faster during windy days of more temperature and less humidity. So, जिस दिन विंड ज्यादा हुई तो वो चारों ओर फैलती है विद 15 किलोमीटर्स पर आवर, और उसकी वजह से पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है वो जल के राख हो सकता है। और दूसरी चीज, जो नियर बाई सेटलमेंट्स होते हैं, मतलब जो नजदीकी रहते हैं, फॉरेस्ट के नजदीक जिनके घर होते हैं, वो भी बर्न हो सकते हैं। Some trees ooze out oily and inflammable material, so the fire spreads faster. Once the forest fire starts, it spreads in the directions of wind, advancing at a velocity of about 15 kilometers per hour on all sides. Once it starts, and if attempts are not made promptly to extinguish it, forest fire can be stopped only by two things. अगर हम लोगों ने promptly काम नहीं किया तो forest fire दो ही चीज से बंद हो सकती है, या तो वो खुद बुझ सकती है, या तो excessive या heavy rainfall हो तो ही हम लोग उसको बुझा सकते हैं, अगर पहले से प्लानिंग नहीं किया हो तो, ठीक है। The forest fire would stop only under two situations. One, the forest fire is extinguished completely by itself, or two, due to heavy rain. Due to forest fire, smoke and spark rising high with the warm air current create a risk of fire among the nearby settlements. What to do?
Act according to the instructions from Forest Department. So do not litter everywhere. ठीक है, कहीं पे भी कचरा कूड़ा ना फेंको. उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उनके जो भी इंफॉर्मेशन है उनको सही ढंग से फॉलो करना चाहिए. Arrange special patrolling in forests during dry season. स्पेशल पेट्रोलिंग मीन्स वहां पे जाके हर एक इंस्पेक्टर को, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर को बार बार चेक करना चाहिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है. ठीक है. Seasons. Employees of Forest Department should be trained for extinguishing forest fire. What not to do. While traveling through a forest, do not throw a burning bidi or other things. People living in settlements near the forest fire area should not ignore the instructions from Forest Department. So, जो भी Forest Department instructions देती है उनको ढंग से informations सुननी चाहिए और act according to them without any sort of argument. Man-induced disasters. So that's the end of our today's session, in which we have completed introduction, types of disasters and natural disasters. Now from tomorrow we will be seeing man-induced disasters and other remaining 2 topics of this chapter. So if you have gone through this video, please do like, share, comment, and do not forget to subscribe my channel. I am Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching. Thank you very much. Bye bye.